team Banershala, and today we are going to learn how to absorb impact after you've done a drop. So we're going to learn how to drop to roll, drop to gallop or drop to a vault. Let's go. Now as you've guessed, हम लोग ये combination moves के tutorials इसलिए बना रहे हैं ताकि parkour के moves जो आप हमसे already सीख चुके हैं आपके लिए daily life में useful बने. So that you understand how to apply them. It's just like learning words and then making a language out of it. So this is what the coming tutorials are wanting to do for you. आज हम drop to absorbing impact सीखने वाले हैं. Because not only is it important to learn the moves but also learn how to train smartly so that your body can be preserved and you can enjoy a longer practice like we always say. Drop आपने हमारे साथ सीखा हुआ है. You've learned how to roll, you've learned how to gallop, and we've also taught you a lot of vaults. I'm going to start with the first combination on this wall, which is drop to gallop, and let's see how do you absorb impact when you gallop out of a drop. You already know कि आपको gallop के position में enter करना है. So that means you are already ready mentally to place your hands first right after your landing and then smoothly translate your momentum into your feet like this. Drop and then hands into feet just like you've learned in a gallop tutorial. Let's look at it again. Drop into a gallop. इसमें precautions क्या लेने हैं? सबसे पहले just remember that जब आप सारे टेक्निक सीख लेंगे Gallop is one of those techniques जो average speed में होता है. Important things about doing drop to gallop. First is to identify when do you use this technique and not others. अब जैसे जैसे ये वीडियो देखते जाएंगे आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा. But for sure I can tell you now, you use drop to gallop then when your speed is not so much कि आपको drop to roll करना है. Because what I mean by this is अगर आपकी स्पीड इतनी होगी दैट योर बॉडी नीड अ रोल और आप हैंड्स दे देते हैं देन योर रिस्ट्स विल गेट ऑल द इम्पैक्ट एंड दैट माइट नॉट बी गुड इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है. दिस यू विल लर्न मोर व्हेन यू लर्न ड्रॉप टू रोल. सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग ड्रॉप टू गैलप इसकी आपकी गैलप की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए. अदरवाइज अगेन you don't know आपका गलत impact transfer हो सकता है either of the wrists, either of the ankles. You have to have a good flow of your gallop and practice it on both sides because different jumps might need you to gallop either left or right side. Let's learn how to drop to roll now. Drop to roll मोस्टली तब करना बेस्ट है जब आपकी बॉडी की स्पीड इतनी ज़्यादा है दैट यू नीड द ग्राउंड टू अब्जॉर्ब योर बॉडी स्पीड एंड बॉडी इम्पैक्ट. How do you know if your speed is too much? Generally when you're doing a high drop, that means when you're pulled with into gravity, it already adds to the speed of your fall. You will need to translate it on the ground. Or if you're not too high but you're a little far from your place of landing and you have to do a really broad jump या आपका maximum effort लग रहा है horizontally in covering distance, then most likely you will have a lot of speed after your landing and आपको ज़रूरत पड़ेगी to translate it into a roll. Please be cautious. आपका roll बहुत अच्छे से practice होना चाहिए on whatever side you choose to go. I always recommend practice both sides. बट अगर आप एक भी साइड पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो रोल आपका परफेक्ट होना चाहिए. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज इफ वी आर हैंडलिंग अ स्पीड जो हम खुद रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने एंकल्स या नी से या नहीं रोकना चाहते हैं. नाउ इमेजिन अगर उस स्पीड को हम कम प्रैक्टिस रोल में दे देंगे देन ऑलरेडी वी मेक आवर फोर आर्म्स, रिस्ट्स, आवर जॉइंट्स, मे बी इवन आवर शोल्डर और हेड वेरी वल्नरेबल टू इंजरीज just because हमारी टेक्निक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं थी. So once you have your roll 100% practiced, then you can practice drop to roll. Let's learn how. Now it happens very quickly because speed is high. तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी कि मेरे बॉडी का स्टैंस क्या है जब मैं इस मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में कनेक्ट कर रही हूँ. When you watch me roll, just notice how when I go for a drop, I keep the forward stance of my body. I don't try to stop it by sticking it or trying to stop my jump. I keep into the stance so that I get a nice quick roll out of it. Let's watch this little closely. It happens quickly and my roll is as smooth as possible, giving me pretty much no impact on my body.
Now the third way we are going to discuss today of absorbing impact from our drop is to use vaults to exit the drop. Vaults मतलब हमने बहुत सारे vaults सीखे हैं और आज मैं आपको दो दिखाऊंगी, corner vault and reverse vault. But you can literally use pretty much all the vaults to exit from a drop, whether it is thief, lazy, two-handed vault, Kong vault, any vault. Let me show you how I use reverse vault to exit a drop. I'm going to use this wall and platform to do that. The thing to observe in this technique is how my body prepares for the vault already when I'm midway through the drop, and by the time I land I'm ready to execute the vault, because you know कि drop की generally speed इतनी होती है that you can't stop there and think. Also then it's not so enjoyable or impactful as a movement. It is more enjoyable if you are already ready to translate your momentum and then the move happens. Let me show you how. I'm going to drop and my body is ready to twist with my palm ready here into a reverse vault. Now let's see this slightly faster. I want to demonstrate drop to vault for you with one more option. So let's see drop to corner vault. Now watch how I change my body to be able to enter a corner vault versus how I twisted my body जब मेरे को पता था कि मुझे drop से reverse में जाना है. Now corner vault is right in front of me. All I have to do is reach out with my arm, be ready to place them for a corner vault and then float out of it. Let's see it. So ये था drop to roll gallop vault video so that आप अपने drop का absorb कर सके impact and समझ सके कि momentum continue कैसे रखना है. Now as you know, we are trying our best to bring our experience to you via these tutorials and I have heard a lot of you are benefiting from it as well. But मैंने सबसे ज़्यादा तब सीखा जब मैंने बाकी एथलीट्स के साथ जाके प्रैक्टिस किया, जब वो मुझे देख के मेरे बॉडी के बारे में कुछ बता सकते थे, मेरे मूव्स को अपने एक्सपीरियंस से बेटर बना सकते थे. एंड ऑफ कोर्स जो साथ में मिलके प्रैक्टिस करने का मज़ा है वो अकेले में तो कभी नहीं है. सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आइदर द शाला विच इज़ इन गुड़गांव और नाउ वी आर इवन कमिंग टू लोधी गार्डन विच इज़ इन दिल्ली. एंड इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं या फिर vanashala.com जाके बुक भी कर सकते हैं डायरेक्टली. बट आई वुड रियली encourage you कि आप आइए, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर. वी वुड लव टू शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू एंड आई प्रॉमिस यू अ great time. So bye and see you for the next tutorial.